Good morning, Namaskar. Lok Adalat and free legal aid. On the request of everyone, I am making this awareness video. What is Lok Adalat and free legal aid? As you all know, 27 July will be National Lok Adalat across India. On the request of many, so I am delivering this awareness lecture. Today, we will dive into a critical pillar of the Indian judicial system, the Lok Adalat, its types, history, constitutional provisions, the National Legal Service Authority Act 1987, which governs this, and the procedure of the Lok Adalat. कि अगर आपको free legal aid चाहिए तो आप eligible कैसे होते हैं? How you become eligible to in these things? So first of all, let us see what is Lok Adalat. Lok Adalat meaning जैसे है People's Court is an alternate dispute resolution ADR है mechanism in India. ये एक ऐसा मंच है जहां पर विवादों का समाधान अनौपचारिक तरीके से सौहार्दपूर्ण समझौते के आधार पर किया जाता है. दिस ऑफर्स एन इनफॉर्मल, एमिकेबल एंड एक्सपीडिएंट मींस of settling disputes without the complexities and expenses of regular courts. The emphasis is on the compromise and mutual settlements, making justice accessible to all segments of the society. That is, न्याय सबके लिए. The concept of Lok Adalat is deeply rooted in India's traditional system of dispute resolution, like panchayats, village councils. लोक अदालत का आधुनिकरण स्वरूप 1980 के दशक में शुरू हुआ था. सच में तो the first Lok Adalat was organized in Gujarat in 1982, marking the beginning of a structured approach to alternate dispute resolution. The success of this model led to widespread adoption across the country. इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? भारत के संविधान में इस फ्री लीगल एड और लोक अदालत के बारे में क्या क्या प्रावधान है? व्हाट आर द प्रोविजंस दैट वी आर सेइंग? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, particularly Article 14 and 39A, underlines the importance of promoting justice on the basis of equal opportunity. Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of laws within the territory of India. Article 39A mandates that the state secures that the operates the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall provide free legal aid to ensure the opportunities for securing justice are not denied to any citizens by reason of economic or other disabilities. द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के बारे में भी हम लोग जान देते हैं. और द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर लीगल एड एंड सक्सेस ऑफ अर्ली लोक अदालत कल्मिनेटेड द इनैक्टमेंट ऑफ द नेशनल लोक अदालत अथॉरिटीज एक्ट 1987, जो आया अक्टूबर के आसपास 1987 में आया था. दिस एक्ट एस्टेब्लिशेस स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क टू सेट अप नेशनवाइड नेटवर्क टू प्रोवाइड फ्री and competent legal services to the weaker sections of the society. They reinforced the concept of Lok Adalat as an integral part of Indian legal ecosystem. The Act's key provisions, दो ये Act है उसके key provisions क्या क्या है? इसमें नालसा बनाया. Establishment of NALSA, the National Legal Service Authority, was constituted to oversee and implement legal aid programs and schemes. यह संगठन सभी के लिए न्याय तक पहुँचे के नारा के तहत काम करती है. न्याय सबके लिए. State and district legal service authorities, union territories have their respective state legal service authorities, while each district has their district legal services authorities. These authorities work in coordination to the extent of legal aid across various levels. Lok Adalat organization. The Act provides for the organization of Lok Adalat at various levels. जैसे वो state level पे, district level पे, तालुका blocks and higher level like the Supreme Courts and the High Courts. लोक अदालत के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ लोक अदालत. लोक अदालत कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स based on their jurisdictions and the nature of disputes they handle. For example, permanent Lok Adalat. They deal with the public utility services such as transport, postal, telegraph, and supply of water and power. They can pass orders even if the parties do not reach a compromise. This is the one distinguished feature of permanent Lok Adalat. National Lok Adalat organizes at regular intervals across the country to dispose of a large number of pending cases in a single day. Mobile Lok Adalat. These travel at various parts, especially remote areas, to resolve disputes on the spot. Then there is a Mega Lok Adalat, conducted at a large scale, sometimes encompassing multiple states, regions, to handle a very high volume of cases. Now, what are the procedures of the Lok Adalat? Who are eligible to get these benefits? And how the conclusion or how the settlement is reached. लोक अदालत में विवाद समाधान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होती है. The procedure generally includes the following steps: filing of the cases,
आप उसको केस के फिल करते हैं, पक्षकार अपनी शिकायत या विवाद जो भी है की जानकारी संबंधित लोक अदालत में दर्ज करते हैं। जो आवेदन मंगाए जाते हैं, द एप्लीकेशन आर आस्क्ड टू सबमिट एनीबडी हु वांट्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन लोक अदालत। नोटिस टू अपोजिट पार्टी देन इट इज गिवन, अदर पार्टी को अपोजिट की भेजा जाता है ताकि वो भी अपनी बात रख सके। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। हियरिंग, दोनों पक्षकार अपनी अपनी बात रखते हैं और मध्यस्थता के माध्यम से, मेडिएशन के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ते हैं। दे रीच टुवर्ड द कंक्लूजन। कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाता है एंड इसमें अवार्ड दिया जाता है। समझौते के आधार पर लोक अदालत में अपना निर्णय सुनाती है, जिसे अवार्ड कहते हैं, कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाता है। ये जनरली इसमें फ्री लीगल एड जो होता है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कौन कौन है उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है। नालसा का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग को न्याय पहुंचाना है। इसमें शामिल है अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, लेबर्स जो पुअर है, उनके सबके लिए ये फ्री लीगल एड की व्यवस्था भी नालसा करती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस दैट आर हैंडल्ड बाय द लोक अदालत। लोक अदालत में बहुत सारे केसेस जो हल होते हैं या फिर जो डिस्प्यूट सेटल होते हैं, वैसे हैं वैवाहिक विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि या संपत्ति से रिलेटेड विवाद, दुर्घटना और मुआवजे से रिलेटेड विवाद, अन्य दीवानी मामले, सिविल मैटर्स। सो दिस इज व्हाट जनरली लोक अदालत इज ऑल अबाउट. Lok Adalat represent an amalgamation of India's rich tradition of dispute resolution and the modern need for the speedy and cost-effective justice. So there are various types and backing of the National Legal Services Authority Act of 1987. Lok Adalats have become an indispensable part of India's quest today to make justice accessible and equitable. वे संविधानिक वादे को साकार करते हैं, न्याय सभी के लिए, जल्दी और सस्ते में. Thank you for your attention. Thank you for attending for today's online lecture. This concludes the lecture on Lok Adalat, which was very brief and short. If you have any questions or wish to discuss specific aspects further, please feel free to ask me. And don't forget to subscribe and like the video so that it gives me encouragement to make more videos free for you all, so that awareness is there. Thank you all. Jai Vidhi Seva, Jai Hind.